that how does it work. So we see that there's a time pressure, we see fear of consequences, we see external expectations, we see uncertainty, we see information overload. So all of these things we do face whenever we are making a decision. Yes? If you guys can share your mechanism whenever you have to take any decision under stressful situation. So what do you look at the most, the external factors or the internal mechanism? If anyone can answer, there's no right or wrong, it's just a discussion. Okay, Zulfikar Saab is saying internal most. Right. It cannot see if they're responding over chat. Yes, they're responding over chat. Okay. Okay. What did he say? Internal most, and Mr. Osama also said mostly internal factor. Okay. Can they elaborate any one of them if they can elaborate what does that internal factor mean to them? Okay, okay. That's all right. Okay, so internal factors could be anything. You guys are right. Sometimes internal, sometimes external. Internal could be anything. It could be the pressure that you're taking from the external environment, but it is impacting your decision making capabilities. So bad decisions are not, we cannot really say that bad decisions are happening because of the lack of intelligence. No, intelligence is one thing that is there. Obviously, it is there. That is why you're sitting at that position, right? But the decision that you took could be a good one or a bad one. It really depends on the patterns. As I said that because we study human behavior, so we really study the patterns. How does those patterns they work, right? So the patterns are quite predictable. In psychology, when we study the patterns, we can see, okay, if person A has behaved in a certain way in one situation, most probably he or she can behave like this again in an upcoming situation too. So since these patterns are predictable, so they can be prevented. This is a very good point here that if we are studying or if we are looking at the decisions, that how do we make such decisions? So that means we are looking at the patterns. And when we are looking at the patterns, that means we can really prevent them. So if we can prevent the patterns, we can obviously prevent the decision, the bad decision. Okay, but how does the brain work? How does the brain make any decision? We really need to look into that. Okay, what exactly happens to our brain, right? I would like to see the chat box as well, but I am unable to see where is it. Okay, okay, I find. ठीक है, ठीक है, ठीक. अच्छा, our brain, it basically works in two ways. There are two systems that are associated to our brain, right? One is the brain, the system that works really fast, mostly unconscious, automatic. Everyday decisions are basically made by following that part of the brain or that system. But it is since we use it most of the time, so error prone भी ये ज़्यादा होता है. And on the other hand, we have system two, which is quite slow, very conscious, effortful, complex decisions, or very relatable or reliable होता है हमारा system two. But if any one of you can tell me, when we have to make a decision, are we really going with system one
or system 2 most of the times, if we have to say so? I think system two, when making some decision, it depends on the intensity of the decision. Okay. Be it any simpler decision that you have to make. So would you You can go also with say system system one. 1? Yeah. System 1. Yes, yes. So mostly we just unconsciously go with system 1. But the complex decisions, the decisions that involve leadership, they should come from system 2. Why? Because effortful decisions होते हैं, effortful thinking होती है हमारी. So if we are really thinking through the things, because obviously we have to make a decision regarding leadership, right? Well, for example, your company or your organization is under a lot of stress. There is a crisis situation. So you have to think through things. So you really have to go through system 2 at that moment rather than going with system 1. Now, the question is, since we are saying that system 1 is unconscious, so obviously रिफ्लेक्सेस पे डेवलप हो जाते हैं ना आपके डिसीजंस या आपका कोई भी ऐसी चीज जो अनकॉन्शियसली ऑपरेट हो रही है. तो जब वो सिस्टम वन आपके रिफ्लेक्सेस पे है, आपका इतनी क्राइसिस की सिचुएशन है, तो ऑटोमेटिकली वोंट यू थिंक के सिस्टम वन पे ही यू वुड क्लिक rather than going for system 2? Yeah, I can see the chat now. System 1, ठीक है. Yes. So system two ko jab whenever we have to face a situation which is complex, which demands most of your tasks and thinking and effortful decisions, then you need to go with system two, but it requires practice. It requires expertise. It requires skills that we're going to learn through this webinar. So the brain uses pattern recognition, as I said earlier. As long as we're talking about patterns, we really need to talk about emotional memory as well, past experiences, rapid assumptions, threat detection. So, if any one of you can share any latest decision that he or she has to make, and that person has used the things that I just mentioned, uh, by pattern, any emotion, any past experience, any rapid assumption, anything they have used from the following things that I just mentioned. Okay, someone said when we are experienced and used to same situations every time, then we go for system one unconsciously. That is very right. But this is the basically gist of today's webinar, that we have to create a balance between system one and system two. And whenever there is a situation that requires effortful thinking, we really need to make some conscious choices and go for system two, right? So if any one of you can share any recent decision that person has taken. Okay. All right. No problem. Okay, so exactly whenever we are under certain pressure, our brain, it works for the survival rather than going for the strategy. Even though I am saying that under stressful situations, you need to follow your system too, your conscious brain. But brain is already trained for the survival. So it doesn't use the strategy. It just go with the survival strategies. वो पैटर्न को देखेगा कि पहले मैंने कैसे किया था इस सिचुएशन में, अब मुझे कैसे परफॉर्म करना है. या कोई इमोशन अटैच्ड होगा कि पहले मैंने जो है एक अग्रेसिव सॉर्ट ऑफ डिसीजन लिया था, तो अभी भी मुझे अग्रेसिव स्ट्रैटेजी के साथ चलना है. कोई पास्ट एक्सपीरियंस को देखेंगे या कोई ऐसे ही रैपिड assumption बना लेंगे. जब हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरीके से हम इन डिसीजंस को बनाते हैं, क्या ऐसी हमारे थिंकिंग के पैटर्न्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं
तो फिर यहाँ पर आपको अजम्पशन ज्यादा बेहतर समझ आएगी, या कोई ऐसा थ्रेट है जो आपको है कि भाई अभी वी हैव टू टेक दिस डिसीजन नो मैटर व्हाट, राइट और रॉन्ग देखा जाएगा, कॉन्सिक्वेंसेस को वी विल कंसिडर लेटर, बट राइट नाउ वी रियली हैव टू टेक दिस डिसीजन, right? So what we are doing, we are just going for the survival, not using any strategy. And this is where we are not doing right thing. Next, brain under crisis में एक और चीज है that is very interesting. I would like to share it with you guys. There's a center or a part in brain known as amygdala. This is basically an emotional center. So whenever we are taking any decision under pressure or we are in the rush, so our amygdala, it gets hijacked. तो when it is hijacked, तो जो हमारे ब्रेन के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारे जो होते हैं ना वो सर्वाइवल मोड को एक्टिवेट कर देते हैं, हमारा स्ट्रेस हार्मोन उस टाइम पर इंक्रीज हो जाता है, हमारी जितनी अटेंशन की जो कैपेबिलिटीज हैं वो नैरो होने लग जाती हैं, इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है और जो लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है वो डिक्रीज होने लग जाती है. So now I'm going to ask you guys again one question. If you can think about any decision where आपको ये सब चीजें आपने प्रैक्टिस की हो, कोई भी ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट आया और आपने कहा हो कि आई हैव टू टेक दिस डिसीजन नो मैटर व्हाट, और आपके ब्रेन ने उसको एज अ थ्रेट परसीव किया हो. इफ एनी वन ऑफ यू कैन शेयर एनी ऑफ द एक्सपीरियंस. ओके, अब उससे होता ये है, दैट्स ऑल राइट, इफ नो वन इज कंफर्टेबल शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस, कुड यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? या, आई एम आस्किंग if you can reflect in the past and see any decision that you made under pressure, तो क्या आप देखते हैं कि ये जो चीजें अभी हम समझ रहे हैं कि आपका ब्रेन किस तरीके से परफॉर्म करता है अंडर स्ट्रेस और अंडर क्राइसिस, ये सब चीजें आपके साथ हुई हो बट यू weren't aware of those things at that time, any decision that you took in the recent past? या, बिल्कुल जुल्फिकार साहब, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है कि हाई इमोशंस होते हैं, इट हैपेंस विद मी अ लॉट ऑफ टाइम. जी, सो इफ आई कैन टेक योर नेम मिस, तो एग्जैक्टली इफ इट हैपेंस with everyone all of the time but we're not exactly aware of it, and it is not about the decision that we take under stressful situations, it basically becomes a sort of a pattern of yours. तो आपको अगर छोटा डिसीजन भी लेना है तो आप उसको एज ए थ्रेट परसीव करते हैं और आपका ब्रेन सर्वाइवल मोड पे चला जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग के लिए आपका जो फ्रंटल पार्ट होता है दैट इज इन्वॉल्व, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है. और जब वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है उस टाइम पर आपकी अटेंशन जो है ना, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है, अटेंशन स्पैन कम हो जाता है और इम्पल्सिविटी आपकी बढ़ जाती है. तो रादर देन गोइंग फॉर दैट, हमने अपने माइंड को कैसे रेगुलेटेड रखना है, हमने अपने इमोशंस पे कैसे काम करना है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी विल लर्न थ्रू दिस वेबिनार. अब इसमें होता क्या है कि जब आपका एमिगडाला हाईजैक हो जाता है तो उससे आपकी लीडरशिप पे क्या इफेक्ट आता है, सिंस वी आर डिस्कसिंग लीडरशिप लॉट. तो ऑब्वियसली जब आप अटेंशन नहीं दे पा रहे, जब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, I do have many stories to share, but I'm having some connectivity issues as I'm traveling. Oh, good. That's okay. You can just write it down. Okay. So उसकी वजह से आपका communication जो होता है ना, that becomes very reactive rather than being proactive or at least to some state responsive. आपका जो communication style होता है वो reactive हो जाता है. Risk assessment आप सही से नहीं कर पाते, आपके इमोशनल डिसीजंस होते हैं, आपकी क्रिएटिविटी रिड्यूस हो जाती है, एंड टनल विजन, दैट मींस आपका जो विजन है वो बहुत लिमिटेड हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस amygdala hijack. So now if you can understand how important it is to understand the brain, to really understand the processes of brain just for decision making. As I said earlier कि डिसीजन मेकिंग में कुछ आपका ब्रेन के कुछ स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, बट वही ब्रेन के स्ट्रक्चर्स आपको साइकोलॉजिकली किस तरीके से आपके डिसीजन में इन्वॉल्व हैं या आपके किस तरह के थिंकिंग ट्रैप्स हैं,
Now let's have a look at that. तो cognitive biases हम कहते हैं thinking traps, और वो cognitive biases आपके decision quality को किस तरीके से destroy करती हैं. I just listed down a few of the cognitive biases because it's a vast topic. The cognitions, the decision making, the problem solving, and psychology behind everything is really complicated. It is not as simple as I am saying right now. It has a lot of folds that we cannot go into right now because of the shortage of time. But inshallah, we will be discussing each and everything in detail in our upcoming course. We will be sharing the details of the course by the end of this webinar. Acha, so the cognitive biases that destroy decision quality, usme we can see confirmation bias. I'm sure you guys must be aware of it. Confirmation bias is, for example, if I have to take a decision, so what I would look at in my past, any decision, any evidence that would support my existing belief. If I have to take any decision in the present, I would look in the past and see any evidence that can support my decision at the moment. Is it clear? So, as the name suggests, that I am just confirming, I am just taking the evidence that suits me at the moment. Right. Ma'am, doesn't this depend on the situation that how we decide things? Yes, it does depend, but the brain works exactly the same across different situations. It is like the way you train your brain over years. अभी हमने बात की ना सिस्टम्स की, तो क्योंकि हम बहुत ट्रेन कर देते हैं अपने ब्रेन को अनकॉन्शियसली रैपिड डिसीजंस लेने के, तो सिचुएशन जैसे भी हो हमारा ब्रेन उन पैटर्न को रीड करेगा और उन पैटर्न्स के बेस पे वो डिसीजन ले लेगा. ठीक है? Because normally we are very calm and low emotional, but when medical decision comes, we are out of options and have to take emotional decisions. Yes, it depends. It depends, but sometimes we really have to think through things. और वही चीजें हैं हम इसमें देखेंगे. Yes, it can be affected by ADHD as well. ADHD, if people are aware of it, attention deficit hyperactivity disorder, obviously उससे भी आपकी decision making capabilities disturb होती हैं क्योंकि आपकी attention disturbed होती है, right? अच्छा, उसके बाद है जी loss aversion. Avoiding losses instead of making strategic choices. Since we are talking about management here, मैनेजमेंट को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, लीडरशिप की बात है ना, तो मैनेजमेंट को कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिसमें उनको रिस्क को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है या सम सिचुएशंस में बहुत ज्यादा देखना पड़ता है. ठीक है? अब लॉस अवर्जन ये है कि आप लॉस में इतना अवॉइड कर रहे हो, आप कहते हो कि मैंने लॉस लेना ही नहीं है, बस मुझे किसी भी तरीके से प्रॉफिट हो. तो व्हेन यू आर रियली फोकस्ड ऑन गेटिंग द प्रॉफिट एंड अवॉइडिंग द लॉसेस, then you would make a rush decision, impulsive decision. So that again goes back to your thinking error. Okay? Acha, is it linked with multitasking as well? No, it is not linked with multitasking as such directly, but ये कि जब आप multitasking करें तो आपकी attention diverted है, ठीक है? मुख्तलिफ जगहों पर है. तो उससे ये होगा कि अगर आपको कोई ऐसा डिसीजन लेना है जो हाई स्टेक डिसीजन है, तो उसके लिए आपको सिर्फ उसी पे फोकस करना है. यू कैन नॉट मल्टीटास्क एट दैट टाइम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? अदरवाइज जब आप छोटे डेली के टास्क कर रहे हैं तो उसमें मल्टीटास्किंग करना आपकी डिसीजन मेकिंग को उस हिसाब से इफेक्ट नहीं करता. अच्छा, उसके बाद है हमारे पास एक्शन बाइस. डूइंग समथिंग क्विकली जस्ट टू फील इन कंट्रोल. दिस इज वेरी कॉमन. And I've seen this very much, that people take decisions just so that they can take that power. They can be in control. But this is a thinking error. This is a cognitive bias that we do. ठीक है? ओवर कॉन्फिडेंस बाइस, एज द नेम सजेस्ट, आप इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो चीजों को लेके, आप कहते हो कि ओह दिस इज लाइक नथिंग फॉर मी, आई कैन टेक सच डिसीजंस इन नो टाइम. ठीक हो गया? उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, sunk cost fallacy, continuing failing decisions because too much was already invested. Sometimes ये होता है कि since you have invested too much on one project, but the project is not coming to the point where you can say, oh, this is my project.
I mean, that project is not really delivering the way you expected it to deliver. So what happens? आप उसी पर बार बार ऐसे डिसीजंस ले रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारी चीजें इस पे इन्वेस्ट कर दी हैं, तो कोई ना कोई चीज तो ठीक हो जाए, जैसे हम फ्लूक्स कहते हैं कि बस आप तुक्के मारे जा रहे हैं, आप कह रहे हैं ये डिसीजन ले लेते हैं, ये डिसीजन अगेन रश डिसीजंस हो रहे हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस हो रहे हैं, और वो हो रहे हैं आपकी थिंकिंग ट्रैप्स की वजह से, क्योंकि आपने कभी कॉन्शियसली सोचा ही नहीं है कि ये जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं they could be wrong for you, they could be unhealthy in your decision making. Yes, in this we're using system 1. Yes, most of the time unconsciously we are using system 1. साथ के साथ में चैट्स पे भी जो लोगों के कंसर्न्स और क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ और उसको कनेक्ट भी कर रही हूँ. अच्छा, देन वी हैव ग्रुप थिंक. दिस इज अ वेरी कॉमन फिनोमेना जो बहुत ज्यादा स्टडी नहीं किया जाता है, जिसको बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है इन अ वे कि जब आपकी जो टीम है ना, ग्रुप थिंक क्या है कि यू हैव अ टीम और आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं. लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं. कुछ लीडर्स होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज को, अपनी टीम्स को हर डिसीजन में इन्वॉल्व रखते हैं. कुछ डिसीजन आपकी मेकिंग इस तरह की होती है कि वो हायरार्किकल होते हैं, यानी जो अपर मैनेजमेंट है दे वुड टेक द डिसीजन और वो उसको नीचे तक पहुंचा देंगे. और कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब ना ही आपकी टॉप मैनेजमेंट, ना मिडिल मैनेजमेंट, ना लोअर मैनेजमेंट, कोई भी आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं और बस इसी तरह से डिसीजंस चल रहे होते हैं. लीडरशिप स्टाइल्स भी बहुत मैटर करते हैं व्हेन इट कम्स टू डिसीजन मेकिंग अंडर क्राइसिस, कि किस तरह का लीडरशिप स्टाइल आप फॉलो कर रहे हैं. तो ग्रुप थिंक क्या है कि जब आपकी एक टीम है बट दैट टीम इज नॉट थिंकिंग इंडिपेंडेंटली. अच्छा, ग्रुप थिंक में ये चीज ली जाती है, हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है. ग्रुप थिंक में एक ये सिस्टम होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो डिफ्यूज हो जाती है, बिकॉज आप एक ग्रुप है. सो जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं, तो उसमें हम खुद ही से अज्यूम कर लेते हैं कि पर्सन ए वुड बी दी इंचार्ज, और पर्सन, इन सम केसेस ये चीज बहुत इस्टेब्लिश होती है, इन सम केसेस ये चीज इस्टेब्लिश नहीं होती है. So let's suppose person A is in charge, but all the other members of the group, they are not really interested in taking the decision or in contributing to that decision for that matter. तो जब आपकी टीम इंडिपेंडेंटली नहीं सोच, और जो प्रेशर है, जो लोड है वो एक ही इंसान पर आ रहा है, तो भी देर आर चांसेस कि वो डिसीजन में इतनी ज्यादा आपकी स्ट्रेंथ ना आए, वो डिसीजन इतना आपके लिए सक्सेसफुल ना हो. एंड व्हाट हैपेंस देन, जब वो सक्सेसफुल नहीं होता, तो वो सारी टीम मिलकर उसी एक इंसान को रिस्पॉन्सिबल ठहराती है कि पर्सन ए टुक द डिसीजन, नाउ द पर्सन ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. या, ठीक है, विदाउट कंसेंसस, दिस इज द एग्जैक्ट एग्जांपल दैट वी कैन कोट हियर. तो उसकी वजह से ये होता है कि कोई भी लीडरशिप को चैलेंज नहीं कर सकता अगर हम ग्रुप थिंक कर रहे हैं, और अगर हम सिर्फ अपनी अपनी जो थिंकिंग है उसको कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे, तो लीडरशिप को चैलेंज ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि देयर इज नो लीडर, राइट. साइलेंस बिकम्स द एग्रीमेंट. आप लोग मतलब बताते नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अभी आई एम आस्किंग यू गाइस क्वेश्चन, तो आप लोग इतना ज्यादा उस तरीके से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो वो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ओके फाइन, आप लोगों को समझ आ रही है. अब आई हैव नो आइडिया इफ यू गाइस आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट और गेटिंग द जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम रियली टॉकिंग अबाउट हियर. लेकिन वो साइलेंस बिकम्स द एग्रीमेंट. ग्रुप थिंक है, टीम जो है वो डिस्कम्फर्ट को अवॉइड कर. डिसेंट फील्स रिस्की, यानी कि अगर आपने किसी चीज को डिसएग्री करना है तो आप कहते हो नहीं नहीं नहीं, इससे बेहतर है कि वी शुड जस्ट अवॉइड इट. ठीक है. नाउ आई रियली नीड आंसर्स फ्रॉम यू गाइस, एंड द क्वेश्चन इज, do people around you challenge your thinking or protect your comfort, if we have to speak like in regards to the leaders? Okay, specifically if any team lead is here or anyone in the group is here. Okay, thank you so much for your responses. If you guys do challenge, then it's a great thing, obviously. जब whenever you challenge someone, so what happens कि एक तो वो इंसान है जो डिसीजन ले रहा है. जब एक इंसान किसी चीज का, people generally challenge, very good. If people challenge, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपकी थिंकिंग को चैलेंज किया जा रहा है. बिकॉज सी व्हेन यू आर वर्किंग टुगेदर ना, सो मैं वही बताने वाली थी कि वी वर्क टुगेदर एज अ टीम.
And in the team, everyone should share their part as well, what their thoughts are. When one person is taking the decision, people generally challenge, is it good? Yes, it could be and it could not be. Again, as Zulfikar Sab said, it depends on your style. Yes, it does depend on your style. But challenge करने से मैं वही बता रही हूँ कि जो थिंकिंग टैंक्स होते हैं ना डिफरेंट, ऑब्वियसली हर इंसान का सोचने का, एक पॉइंट ऑफ व्यू रखने का, एक पर्सपेक्टिव रखने का एंगल डिफरेंट होता है, ठीक है। आपके डिफरेंट ओपिनियंस होंगे, पर्सपेक्टिव्स होंगे, तो वो लाजमी नहीं है कि आप, एक होता है ना हेल्दी आपका जो वो क्रिटिसिज्म होता है, एक हेल्दी डिसएग्रीमेंट होता है, आई पर्सनली बिलीव उसको ग्रुप लेवल पर होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग में उसको होना चाहिए। बिकॉज व्हेन यू चैलेंज समवन with the reasoning, with the rationale, it gives the other person a platform so that they can think from the other person's perspective as well. So this is very important. Only if it is constructive. Yes. Very good. Okay. Anyone else would like to share anything? Do people around you challenge your thinking or protect your comfort? If we have to speak about comfort, comfort say you cannot grow because comfort से आप लिमिट कर रहे हो अपने विजन को भी, अपने पोटेंशियल को भी, आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि आपका कितना पोटेंशियल है। तो वो जो चीजें नैरो डाउन होती है ना, वो बिकॉज ऑफ द कंफर्ट होती है। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू आर अंडर एनी सिचुएशन, do challenge yourself. Start from yourself. If you would start challenging yourself under different circumstances, you would be able to challenge someone else in another situation that can help the other person as well. अच्छा, okay. Next है हमारे पास emotional interference. See, when we talked about in the beginning that there are certain patterns that we see, there are certain emotional attachments, yeah, there are emotions attached to a decision, and it happens. Even बड़े बड़े लेवल पे हम देखते हैं कि लोग जो है based on their emotions they are taking decision, and this is not healthy. ठीक है, बिकॉज जब आप इमोशनली कोई भी डिसीजन लेंगे ना, फॉर एग्जांपल इफ यू आर, एज आई डिस्कस दिस थिंग अर्लियर, कि अगर आपको कोई क्राइसिस की सिचुएशन है, कोई पैनिक सिचुएशन है, कोई प्रेशर्ड सिचुएशन है, तो उसमें आपके जो डिसीजन होंगे वो बेस्ड होंगे अर्जेंसी पे, वो पैनिक डिसीजंस होंगे, वो रश्ड डिसीजंस होंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इमोशन, इट कैन टेक यू टू द अदर एंड। ठीक है, तो जो इमोशनल स्टेट एक लीडर की होती है ना, बेसिकली इट बिकम्स द क्लाइमेट ऑफ अ टीम। हैव यू गाइस एवर सीन a calm leader can bring anything on the table and can listen to anything that you guys bring to the table? But on the other hand, if there is an aggressive leader, तो वो इमोशंस को ज्यादा टेबल पे रखेंगे, ठीक है, वो हर चीज को अपने इमोशनल एंगल से देखेंगे। एंड दिस इज द पॉइंट वे यू हैव टू सेपरेट योर इमोशंस फ्रॉम योर प्रैक्टिकल लाइफ। ठीक है, बिकॉज एज आई सेड, अगर एंजाइटी होगी तो आपके डिसीजंस अर्जेंसी और पैनिक होंगे, फियर होगा तो आप ओवर कंट्रोल करोगे सिचुएशन को, या फिर आप अवॉइडेंस करोगे सिचुएशन से। ठीक है, थैंक यू। ईगो अगर आपकी इन्वॉल्व हो जाएगी तो आप अनसर्टेनिटी को देख ही नहीं पाओगे, और आपको पता है जो भी सिचुएशंस अनसर्टन होती है उसमें लीडरशिप को इंटैक्ट रहना बहुत जरूरी होता है, एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस इन डिटेल इन द अपकमिंग कोर्स, लीडरशिप इन इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी। अनसर्टन सिचुएशन है, तो अनसर्टन सिचुएशन में लीडर्स को कैसे बिहेव करना है, उनकी थिंकिंग कैसे होनी चाहिए, उनकी डिसीजन मेकिंग कैसे होनी चाहिए, ये सब चीजें वी विल डिस्कस इन डिटेल। प्रेशर अगर आपको दिया जा रहा है, एज वी डिस्कस्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेशन, कि जो अगर आपके प्रेशर्ड डिसीजंस होंगे, सिचुएशंस होंगी, तो आपके डिसीजंस आपके रश्ड होंगे, आप यूनियन डिसीजंस होंगे। ठीक है, उसके बाद एक बहुत कॉमन फिनोमेना है जो कितना ज्यादा स्टडी नहीं किया जाता व्हेन वी स्टडी लीडरशिप, दैट इज डिसीजन फटीग। ऑब्वियसली जब लीडर्स इतनी ज्यादा डिसीजन डेली बेसिस पे ले रहे हैं, तो देयर कम्स अ पॉइंट कि वो डिसीजन फटीग का शिकार हो जाते हैं। फटीग का मतलब ये है कि उन वो इनडिसाइसिव नहीं है, दैट मीन्स
The problem is not with their decision making. The problem is that they become cognitively exhausted. That means वो इतना सोचते हैं, इतनी उनकी foresee thinking होती है कि sometimes they get tired because they are human beings too. But this decision fatigue, it is the hidden leadership train, right? And most of the people, they don't talk about it because it is not very common. ठीक है? अब उसमें होता क्या है, सिंस यू आर टेकिंग डिसीजंस ऑन डेली बेसिस, तो आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो डिक्रीज होने लग जाती है. जब वो डिक्रीज होती है, आपकी इम्पल्सिविटी बढ़ जाती है. इम्पल्सिविटी इज कि आपको कहा जाए कि आपने ये डिसीजन लेना है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, आपको कि नहीं, मुझे ये ठीक लग रहा है, लेट्स टेक इट, चाहे उसके प्रोज एंड कॉन्स कुछ भी है. बट यू आर सो एग्जॉस्टेड अप हियर दैट यू वुड लाइक कि ओके, लेट्स गो विद दिस, लेट्स गेट रिड ऑफ दिस. ठीक है? पेशेंस आपकी खत्म होने लग जाती है, अवॉइडेंस आने लग जाती है, आप रिस्पॉन्सेज को डिले करने लग जाते हैं, इमोशनल रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपकी डेली लाइफ इफेक्ट होती है. आप इरिटेटेड रहते हो, एजिटेटेड रहते हो, आप ऑल द टाइम यू लाइक, ओ आई एम जस्ट टायर्ड. ऑल द टाइम you would feel that fatigue, not only emotionally and mentally, but most of the cases I have seen physically भी लोग बहुत ज्यादा ऐसे होते हैं कि they do not feel like टॉकिंग टू एनीवन. विड्रॉल आने लग जाता है उनमें. तो दिस इज इतनी डेंजरस है ये डिसीजन फटीग. इसीलिए whenever we deliver lectures in corporate sectors, we always tell people to take frequent breaks. It is very important, right? अच्छा, उसके बाद अगर लीडरशिप अंडर प्रेशर है, फॉर एग्जाम्पल आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइज अ क्वेश्चन. कुछ फाइनेंशियल अनसर्टेनिटी है, कुछ पब्लिक क्रिटिसिज्म आपकी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रही है, बहुत सारे ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशंस है, एंड यू आर द लीडर, यू आर ऑन द फ्रंट. सो व्हाट वुड यू डू फर्स्ट? अभी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली ना, तो अभी आप लोग मुझे बताएं कि अगर आप, यू आर अ लीडर एंड यू हैव टू टेक अ डिसीजन because your organization is facing these situations, what would you do first? Okay, prioritize. Thank you. Okay, ठीक है. Prioritize, that means कि आप अपनी थिंकिंग को, एफर्टफुल थिंकिंग को इन्वॉल्व कर रहे हो, सिस्टम टू को इन्वॉल्व कर रहे हो. इफ यू वुड गैदर मोर डेटा, तो आप अपने डेटा को भी जो है देख रहे हैं, दैट मीन्स आप अपने सिस्टम टू को इन्वॉल्व कर रहे हैं. बट इफ यू वुड मेक अ रैपिड डिसीजन और डिले द डिसीजन, दैट मीन्स आप अपने इमोशनल माइंड के साथ जा रहे हैं, या फिर आप अपनी बाइसनेस के साथ जा रहे हैं, यानी आप अपने थिंकिंग ट्रैप में आ चुके हैं. ठीक है? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज हाउ टू फिक्स इट. uh yeah, take 3 minutes break, deep breath. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है. This is a very practical solution and we will talk about this. Thank you so much. अच्छा, the question is, can we avoid pressure? Can we really avoid pressure? Thank you, Sama, for the response. We cannot avoid pressure. So the question is how to fix it. I am going to tell you a structured approach. There are different techniques that you can use, and those techniques are very practical, evidence-based techniques that you can use in your daily life even. अगर कोई smallest decision भी आपने लेना है, you can use that technique, any one of those techniques, and that would help. तो सबसे पहले है कि हाउ टू थिंक क्लियरली अंडर प्रेशर. लीडर को जो है वो रिएक्टिव लीडरशिप से बेहतर है रेगुलेटेड लीडरशिप. रेगुलेटेड लीडरशिप कब होती है? जब आपके इमोशंस रेगुलेटेड होते हैं. समटाइम्स वी प्रोक्रेस्टिनेट अ लॉट. बिल्कुल ऐसा होता है कि जब हमें प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है ना, तो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ फेलियर वी टेंड टू प्रोक्रेस्टिनेट. उसको भी अवॉइड करने के लिए हमें उस इमोशन को मैनेज करना है. फियर है ना, एक इमोशन है. ठीक है? तो इमोशन को मैनेज करने के लिए आपने अपने ट्रिगर को आइडेंटिफाई करना है, आपने अपनी कोपिंग स्ट्रैटेजीज पे वर्कआउट करना है, एंड देन यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट. एंड माइंड यू कि ये सारी टेक्निक्स यू कैन नॉट लर्न लाइक इमीडिएटली, इट टेक्स प्रैक्टिस. और जब आप डेली बेसिस पे ये प्रैक्टिस करते हैं, देन अगेन दीज टेक्निक्स दे बिकम पार्ट ऑफ योर अनकॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस मेमोरी. आपको इतना ज्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ेगा इन टेक्निक्स को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए, इफ यू वुड बी प्रैक्टिसिंग देम अदरवाइज टू, राइट? अच्छा, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क इज पॉज फ्रेमवर्क.
मैं अभी सिर्फ ब्रीफ दे रही हूँ इन सब टेक्निक्स का, इंशाल्लाह हम कोर्स में बहुत डिटेल में इन चीजों को स्टडी भी करेंगे और इम्प्लीमेंट भी करेंगे। द लीडरशिप पॉज, एज आई सेड अर्लियर कि आपका अमिगडाला हैक हो जाता है। तो आपने बहुत ज्यादा इधर मैंने देखा है, लोगों ने मैसेजेस पे चैट बॉक्स में लिखा है कि 3 मिनट्स का हम ब्रेक ले लेंगे, डीप ब्रेथ्स लेंगे। बिल्कुल, you do not have to delay the decision for hours or days. You just have to take a pause for a few seconds. Let's say 60 to 90 seconds. That is the timeline जब आपका अमिगडाला हाईजैक हो रहा है और आपने उसी टाइम में अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल करना है। और वो कैसे करना है? बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। इमोशनल टेक्निक्स हैं, कॉग्निटिव टेक्निक्स हैं। Then there is another technique that is metacognition. That is thinking about your thinking. होता क्या है कि कोई भी डिसीजन मेकिंग है, लेट्स सपोज दैट इज अ पुअर डिसीजन मेकिंग, उसको आपने इवेलुएट करना है। जितनी हमने बाइसेस पढ़ी हैं आपने वो देखनी है, आप कौन से पैटर्न्स को फॉलो कर रहे हैं। दैट वुड बी योर थिंकिंग, कि आप उसको मॉनिटर कर रहे हैं। फिर आप उन पैटर्न्स को एडजस्ट करेंगे एंड देन यू कैन टेक एनी स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, यू कैन डू दैट। ठीक है, दिस इज मेटा कॉग्निशन, लाइक थिंकिंग अबाउट योर ओन थिंकिंग। आप खुद को खुद ही इवेलुएट करें। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है डिसीजन आर्किटेक्चर। इसमें भी मैंने कुछ टेक्निक्स लगाई हैं आपको बताने के लिए, समझाने के लिए कि ये प्रैक्टिकल टूल्स हैं बेटर डिसीजन के लिए। प्री मॉर्टम टेक्निक मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा यूज की जाती है। दैट मीन्स कि आपने फेलियर का एनालिसिस पहले करना है। आपने देखना है कि इफ यू फेल, हम लोग फेलियर से बहुत डरते हैं, जबकि फेलियर ही है जो आपको ज्यादा सिखाता है। So it is better that you keep a note के if this decision would fail, what would you do instead? So this is pre-mortem technique. Red team strategy, assign someone to challenge the decision. हमने अभी डिस्कस किया और किसी ने मुझसे पूछा क्या ये ठीक है चैलेंज करना आपके थिंकिंग को या नहीं। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी है जो मैनेजमेंट में यूज होती है, रेड टीम स्ट्रैटेजी, जिसमें आप एक टीम को असाइन कर देते हैं टू चैलेंज द डिसीजन। उससे क्या होगा? ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको डिटेल में बताया, एक और पर्सपेक्टिव आपके सामने आएगा। बहुत सारे जो टीम होगी ना, सिंस एक रेड टीम स्ट्रैटेजी है तो टीम होगी, तो बहुत सारे और थिंकिंग टैंक्स आपके साथ मिलेंगे एंड दैट वुड हेल्प यू टू टेक अ बेटर डिसीजन मे बी। टाइम बफरिंग, हमने जैसे कहा कि डिले आपने करना है, 60 to 90 सेकेंड्स वुड बी इनफ। लेकिन अगर आपने उसको ज्यादा इन डेप्थ देखना है डिसीजन को, तो 10-10-10 का रूल है। दैट मीन्स how this decision will impact you in 10 minutes from now, in 10 months from now, in 10 years from now. So these are very research based, effective techniques that we can use in our daily life so that we can take better decisions. ठीक है। उसके बाद टीम डिसीजन कल्चर को हमें प्रोमोट करना चाहिए जितना मर्जी हो, जितना हो सकता है। Why? अगर आपकी टीम डिसएग्री कर रही है किसी भी डिसीजन के साथ, तो दैट मीन्स दैट यू रियली नीड टू लुक इनटू दिस। ठीक है। आपने ये नहीं कहना कि नहीं, हाउ कैन यू यू नो डिसएग्री विद मी। आपने जो आपका डिसएग्रीमेंट है उसको इनकरेज करना है, अपने क्वेश्चंस को नॉर्मलाइज करना है। आपने जो फियर का कल्चर होता है ना अक्सर, कि नहीं 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 मैं अगर बात करूंगा तो मेरी मतलब प्रमोशन पे बात आ जाएगी, मेरे और चीजों पे क्वेश्चन रेज कर दिया जाएगा, सो आई 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 डोंट वांट टू गेट इनटू इट। सो वो आप अवॉइडेंस भी करते हैं मोस्टली। अपने साइकोलॉजिकल सेफ्टी को प्रमोट करना है, अपने डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को वैल्यू करना। ठीक है। सो ये जो स्ट्रॉन्ग कल्चर, अगर आप टीम कल्चर को प्रमोट करेंगे, दिस वुड हेल्प यू टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम। ठीक है। So now I'm going to ask you the question, and उसके बाद I will conclude. Which environment is more dangerous? A team that argues respectfully or a team that stays silent under pressure? This is the question for you guys. Thank you. Zulfikar Saab argues respectfully. Yes. What else? Okay, as we discussed this in detail, if we would promote team culture, team decision culture, तो उसमें वो टीम आर्ग्यू करे, but staying in your boundaries. You have to argue with respect.
ठीक है, तभी आपके पर्सपेक्टिव को सुना और समझा जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? ओके, सो द वेबिनार जो आज का था उसका हमारा जो पर्पस था वो ये था कि हमने सिर्फ और सिर्फ बेसिक आपकी जो थिंकिंग पैटर्न है या बेसिक जो हम एरर्स कर रहे हैं अंडर क्राइसिस लीडर्स जो करते हैं उसके साथ आपको अवेयर करवाना था, राइट? बट जो हमारा अपकमिंग कोर्स है दैट इज लीडरशिप ड्यूरिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, दैट वुड बी more focused, yes, that would be more focused on how to lead effectively under pressure. Because remember, the goal is not to avoid the pressure, and certainly we cannot. The goal is to वो उस प्रेशर को हमने समझना कैसे है, उसको हमने एड्रेस कैसे करना है, उस प्रेशर के साथ हमने इफेक्टिवली वर्क कैसे करना है. So the program or the course is designed for professionals who want to develop crisis leadership skills, strategic decision making framework, psychological resilience and leadership, team management during uncertainty, practical tools for real world organizational challenges. These are few of the things that we would be discussing in the course, but the course would be solely on discussions. ठीक है, हम बहुत सारे केस सिनेरियोज डिस्कस करेंगे, रियल लाइफ के एग्जांपल्स के साथ लेके चलेंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस पे बात करेंगे. So this course would be starting from 18th of May, and we will be conducting the course in person, one-to-one, in the group setting here at TEU, I guess. और इसमें जो है हम 5 सेशंस करेंगे और वो सेशंस हमारे 3 hours के होंगे. और यू आर मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दिस कोर्स इफ यू रियली वांट टू understand how leadership works under stressful situations and how can you effectively handle the stress if you are leading a team or if you're a part of team, in fact, and what are the practical tools that can help you to stay calm under stressful situations. That's all from my side. I think floor is open for questions and answer session. Over to you, Iftikhar. Thank you, Mrs. Aisha, for such an insightful and informative presentation. Before going over to the Q&A session, I would very briefly like to go over some of the courses that TEPDC is currently offering. उसमें से एक जो हमारा कोर्स है वो सर्टिफाइड image consulting and professional grooming program है, which is by Nurulan. She is a very seasoned HR professional and corporate trainer. और बेसिकली इस कोर्स का वेबिनार हमने लास्ट वीक भी कंडक्ट किया था, एंड दिस कोर्स इज अबाउट हाउ यू कैन कैरी योरसेल्फ इन अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट. आपकी ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, हाउ यू कैन बी कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर डिलीवरिंग अ प्रेजेंटेशन. तो इस जो कोर्स हमारा ये स्टार्ट हो रहा है 16th मई से है. इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड तो यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू अस. उसके अलावा हमारा जो कोर्स जिसके ये वेबिनार भी हम कंडक्ट कर रहे हैं, और मिसेस आयशा ने काफ़ी अच्छी तरह से इसमें एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ द कोर्स गोइंग टू बी अबाउट. तो इसका रजिस्ट्रेशन लिंक भी हमने साथ चैट में जो है शेयर कर दिया है फ्लायर के साथ. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड और इफ़ यू नो एनीवन एल्स हु माइट बेनिफिट फ्रॉम द कोर्स, तो उनके साथ भी इसको प्लीज़ शेयर करें. उसके बाद हमारा सप्लाई चेन का एक कोर्स है. जो लोग सप्लाई चेन और मैनेजमेंट और फ्रेट फॉरवर्डिंग के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए ये एक तरह से हाईली डिमांडिंग कोर्स भी है. और जो हमारे ये ट्रेनर हैं जो इसको कंडक्ट करवा रहे हैं, ही इज़ वन ऑफ द टॉप प्रोफेशनल्स हु इज़ डिलीवरिंग दिस कोर्स इन इस्लामाबाद. और ये 3 months का प्रोग्राम है, 2 days per week. स्टार्टिंग डेट जो है इसकी वो 8th जून है. एंड सिमिलरली हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंदर लोग हैं उनके लिए भी हमारे पास कोर्स है, और ये चौधरी नसीर अहमद कंडक्ट करवा रहे हैं. इस कोर्स का फर्स्ट बैच जो है हमारा 28 मार्च को स्टार्ट हुआ था. अपकमिंग जो इसका है सेकंड बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 23 मई से स्टार्ट हो रहा है. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ दीज कोर्स, प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू अस. और मैं चैट में जो है हमारा जो कोर्स का कैलेंडर है वो भी हमारे साथ आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ. इफ़ यू फील लाइक एनी इफ एनी ऑफ दीज कोर्सेज इज समथिंग यू वुड वांट टू टेक पार्ट इन, तो आप डेफिनेटली ये कर सकते हैं. सो नाउ आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू Q&A सेशन. अगर आपके कोई सवाल जवाब हैं तो काइंडली चैट में हमारे साथ शेयर करें इस लीडरशिप ड्यूरिंग इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के हवाले से.
Can we get the recording of this session? Iftikhar, someone asked a question. Yes, the session is also available on LinkedIn. It is currently being streamed. A recording of it will be available on LinkedIn. Is this only in-person course or can we join online? इसमें ये कोर्स जो है ये इन पर्सन ही होगा, तो क्योंकि इसमें ज़्यादा डिस्कशन बेस्ड है तो वन ऑन वन सेशन जो है वो इन पर्सन ही जो है फीजिबल होगा. डिस्काउंट हमारे पास ग्रुप डिस्काउंट्स अवेलेबल हैं. अगर 3 से ज़्यादा का ग्रुप है तो उस पर जो है हम 20% का डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं. तो जितने ज़्यादा लोग लाएंगे उतने हिसाब से जो है हम इंशाल्लाह डिस्काउंट जो है वो आपको प्रोवाइड करेंगे. अच्छा, फरमान खान का क्वेश्चन है कोर्स से रिलेटेड. कैन वी रिलेट द कॉन्सेप्ट ऑफ साइकोलॉजिकल सेफ्टी टू दिस? इफ यस, हाउ? Sorry, can we relate the concept of psychological safety to today's webinar or the course? ये क्वेश्चन अपना काइंडली स्पेसिफाई कर दें किस कोर्स के हवाले से है. टुडेज वेबिनार. Psychological safety. Psychological safety is basically when we are talking about the team culture, decision team culture. So that means ke if someone is speaking about their perspective, the other person is listening to that, right? Rather than attaching or associating different remarks to that person. We really need to stick to the point of view, the perspective that we can only understand when we will create a safety net around that. When we would be so sure that if I would bring something, no one would maybe negatively criticize me. Yeah. The healthy criticism is there, right? But if we would associate negativity with that, so that means that psychological safety is somehow missing. So the psychological safety concept is there, and it is the responsibility of the leader to ensure that psychological safety is there in the organizational culture. We have a question from Mr. Furkan Huda as well. In your opinion, which bias is more evident or prevails in corporate environment, either during boss and team member or between cross-functional departments? We cannot pinpoint the specific biases that, okay, these are there, these are there. It really varies from situation to situation. We can see a lot of biases we are happening there in the organizational cultures, but we cannot really pinpoint that, okay, confirmation bias could be more, but mostly sunk cost fallacy, if we see, is most prevailing, but we cannot really pinpoint any. I think that Okay. सॉरी, आप कुछ कह रहे थे जुल्फिकार साहब? I think I think that 5 o'clock we were supposed to end it.
यस, तो हमें लगता है हाँ जी, सवाल जवाब हमारा टाइम जो है बिल्कुल एंड पे आ गया है। तो मैं आप लोगों के साथ चैट में वेबिनार के हवाले से फीडबैक फॉर्म भी जो है शेयर कर दिया, काइंडली इसको फिल कर दें ताकि हमें पता चल सके कि आज का वेबिनार आप लोगों के लिए कैसा रहा। और कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये कोर्स का रजिस्ट्रेशन लिंक आ गया, एंड आई थिंक दिस इज वेयर वी विल रैप अप द इवेंट। So thank you everyone for your participation and taking out the time to join us today. I hope you had a very insightful session just as much as we did, and hope to see you in the course, inshallah. And इफ्तिखार साहब, क्या मैंने देर में ज्वाइन किया था, इज इट पॉसिबल कि आप इसकी रिकॉर्डिंग शेयर कर सकें विद द पार्टिसिपेंट्स आज के इस सेशन की? जी जी, रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह हम प्रोवाइड कर देंगे। हम आपके साथ जो है इसका लिंक शेयर कर देंगे। तो ये लिंक्डइन पे इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं पूरा थैंक यू सो सेशन। मच, अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। Okay everyone, hope you have a nice and blessed weekend. Hope to see you soon, inshallah. Thank you so much, Thank you. Iftikhar. Thank you so much, Zulfikar Saab. And it was a lovely session. I mean, I really thoroughly enjoyed this, interacting with all of the participants, if not then few, maybe. And inshallah, hope to see you guys in the course. Sure. Inshallah. Thank you very much, Ms. Ashim. Thank you. Thank you.